ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय हो। भगवान व्यास जी महाराज की जय हो। शंकराचार्य भगवान की जय हो। स्वामी तपोवन जी महाराज की, स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय, स्वामी दयानंद भगवान की, स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय हो। स्वामी शुद्धानंद भगवान की जय, साध्वी आनंद ज्योति जी की, सभी गुरु देवताओं की जय, माता पिता की जय हो। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशो अध्यायः भक्ति योगायः। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रे करुण एव च निर्मम निरहंकार समदुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततं योगी यतात्म दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धिः यमद्भक्त स ये मे प्रियः यस्मात् न उद्विज्जते लोकः लोकात् न उद्विजते च यः हर्षमर्ष भयोद्वेगे मुक्तः यस च मे प्रियः। चैप्टर नंबर सगुण ब्रह्म उपासक और निर्गुण ब्रह्म उपासक। सगुण ब्रह्म उपासक और निर्गुण ब्रह्म उपासक के बारे में जान रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान ने अर्जुन ने सवाल किया भगवान से, भगवान ने अर्जुन ने भगवान से पहले श्लोक में, दूसरे श्लोक में प्रश्न किया कि निर्गुण ब्रह्म के उपासक भगवान को अति प्रिय हैं या सगुण ब्रह्म के उपासक अति प्रिय हैं। तात्पर्य उनके पूछने का था कि कौन से भक्त है जो भगवान को अति प्रिय हैं, जो भगवान के सगुण रूप को पूजते हैं वो, या भगवान के निर्गुण रूप को पूजते हैं वो भगवान को प्रिय हैं, जो भगवान को जानते हैं, ज्ञानी हैं, वो भगवान के अति नजदीक हैं, या जो भगवान को जानते नहीं हैं पर भगवान के भक्त हैं, भगवान के प्रेमी हैं, भगवान के इच्छुक हैं, भगवान को जानने के इच्छुक हैं, वो भगवान को प्रिय है। तो भगवान कहते हैं कि जो प्रश्न आप कर रहे हैं उस प्रश्न में जो ज्ञानी हैं वो भगवान को प्रिय या अप्रिय नहीं हो सकते, क्योंकि
ज्ञानी तो स्वयं परमात्म स्वरूप होते हैं, जिसकी व्याख्या ले हैं, जो ब्रह्म के उपासक हैं, जो ब्रह्म के सगुण रूप के उपासक हैं, ब्रह्म को नहीं जानते, उसमें भेद हो सकता है। उसमें जो भगवान, जो कर्म योगी हैं, वो भगवान को अति प्रिय है। जो कर्मठ लोग हैं, वो भगवान को कम प्रिय। कर्म तो करते हैं, भगवान को मानते भी हैं, पर भगवान को जानने की इच्छा नहीं रखते। कोई भी कर्म भगवान को अर्पण नहीं करते, अर्पण करते हुए नहीं करते, ना तो फल को फल अर्पण करते हैं, ना कर्म को अर्पण करते हैं। जो अर्पण बुद्धि से कर्म नहीं करते, जो कर्म योगी नहीं है, वो भगवान को कम प्रिय है, वो कर्मठ लोग हैं। और जो कर्म योगी हैं, जो भगवान को सगुण रूप में मानते हुए, भगवान का उपासना करते हुए, भगवान को जानने की इच्छा से, भगवान को जानने की इच्छा से भगवान को अर्पण करते हुए सभी कर्मों करते हैं, तथा उनके उनसे प्राप्त हुए फल और परिस्थिति को फेस करते हैं, भोगते हैं, वो लोग भगवान को अति प्रिय है। वो भगवान के बिल्कुल नजदीक है, वो ज्ञान के नजदीक है, ऐसा भगवान बताते हैं। इस श्लोक में, श्लोक नंबर 13-14, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रे करुण एव च निर्मम निरहंकार समदुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्म दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धिय मद्भक्त समे प्रिय। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य, जो पुरुष, पुरुष का मतलब जो पुरुषार्थ करता है, द वन हु पुट्स इन द एफर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग परमात्मा, या जिसने पुरुषार्थ किया हो, पुरुषः सब भूतों में अद्वेष्टा, द्वेष भाव रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, करुणा एव तथा निर्मम, ममता से रहित, माइंड, उसमें मेरा 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 का कोई भाव नहीं है। देयर इज नथिंग कॉल्ड मेरा, देयर इज नथिंग कॉल्ड मेरा। जो है परमात्मा है, जो है परमात्म स्वरूप है, ये जानना, मेरा नहीं जानना। निरहंकार, मैं में मैं कह के कुछ नहीं है, जो है सो परमात्मा है। ना मेरा कुछ है, ना मैं कुछ हूं। मैं मीन्स द वन, द जीवत्वम, द जीवत्वम व्हेन इट, जब जीवत्वम अपने आप को शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ तदात्म कर लेता है, तब वो मैं होता है। दैट मैं इज नॉट मैं। अहंकार रहित, आई एम फ्री ऑफ दिस बॉडी, आई एम फ्री ऑफ एवरीथिंग, आई एम फ्री ऑफ अदर, आई एम फ्री ऑफ अदर इज मैं। सम दुख क्षमी योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए, मुझ में दृढ़ता निश्चय रखने वाले, मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाले मेरे भक्त मुझको सबसे प्रिय हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। यहाँ पे भगवान ज्ञानी के बारे में बताते हैं। अब तक जितने भी श्लोक हमने करे, वो सब थे कर्म 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 योगियों पे। अब जो आगे जितने भी श्लोक हैं, ये वाला श्लोक और इसके आगे जितने भी श्लोक आएंगे इस चैप्टर में, आखिरी का श्लोक छोड़ करके, इन द चैप्टर टॉक्स अबाउट द पर्सन हु इज सन्यासी, जो सन्यासी है, ज्ञानी है, उसके बारे में विचार करेंगे। Even though later he says that devotee is beloved to me, sabhakta me priyaha. That devotee is beloved to me. Sabhakta me priyaha. कौन सा devotee? He is not talking about devotee that we commonly understand. जो common भक्त मानते हैं, not that devotee. उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं. Not talking about the person जो commonly बात कर रहे हैं. The one who makes a division between himself and Ishwara, जो अपने में और ईश्वर में द्वैत भाव रखता है, ये मैं हूं और ये ईश्वर है, जो ऐसा मानता है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जो ऐसा मानता है उसके बारे में हम बात कर चुके।
If a devotee has this notion of difference between Jiva and Ishvara, we would not have a qualification. He does not. He would not have a qualification mentioned in this verse. उसके अंदर ये qualifications नहीं है. जो किस में होंगी ये qualifications? जो ईश्वर में और अपने आप को अलग नहीं मानता, जो अपने आप को और ईश्वर को अलग नहीं जानता भी, नहीं मानता, नहीं जानता, जो अपने आप को अलग जानता है, जो अपने आप को अलग मानता है, नहीं नहीं नहीं, मैं ईश्वर कैसे हो सकता हूँ, मैं ईश्वर नहीं हूँ, ईश्वर तो मंदिर में बैठे हैं, वैकुंठ में बैठे हैं, स्वर्गलोक में बैठे हैं, ऐसा नहीं. सो ही उसके बाद ये क्वालिफिकेशंस उसको क्वालिफाई नहीं करती है. ऑल दीज व्हाट वी आर गोइंग टू see, you had been asking me what are the baby steps towards understanding Paramatma. So these are the baby steps. तो बेबी स्टेप्स क्या होते हैं जो अब जिनके बारे में हम बात करेंगे, दे आर बेसिक स्टेप्स ऑफ अ ज्ञानी, बेसिक क्वालिफिकेशंस ऑफ द ज्ञानी. So all these are the attribute only of a person who is kritakrityaha, who has found fulfillment through knowing that by nature he is free from limitation. Only through किसके द्वारा? सिर्फ जानने के बाद, सिर्फ जानने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा है कि परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है. देयर इज नथिंग अदर, देयर इज नो अदर, ओनली परमात्मा इज. जानने के बाद, वो मानता नहीं है, वो जानता है. शास्त्रों के अध्ययन के बाद, शास्त्रों को समझने के बाद अब वो ये बात जानता है कि परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं है. एंड दैट परमात्मा इज me alone. That Paramatma is me alone. ऐसा भगवान कहते हैं. So these attributes are only of the person who is kritakritya, who has found fulfillment through knowledge, knowing the nature that he is free from all limitations. He is free from all limitations. Because of that knowledge, he is spontaneously free from hatred. He is free from dvesha. सबसे पहला है ही इज फ्री फ्रॉम, व्हेन देयर इज नो अदर. किससे नफरत करेंगे? किससे 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 द्वेष रखेंगे? देयर इज नो वन जिससे आप द्वेष रख सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो अदर. सिंस देयर इज नो अदर, फ्रॉम whom विल यू हैव द्वेषः? किससे भय होगा? किससे आपको द्वेष होगा? सिंस देयर इज नो अदर. पीपल हैव लॉट ऑफ द्वेषस. छोटे भाई से द्वेष है, वो बड़ा अच्छा कमा रहा है, खा रहा है, या वट एवर, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया. You have dvesha because you think there is someone else, there is other. When you take, जब आप ये देखते हैं कि कोई और है, तब राग भी हो सकता है या द्वेष हो सकता है. There is dvesha when you, जब आप ये मानते हैं कि कोई और है. जब कोई और मानेंगे तो द्वेष होगा, राग होगा. So these qualifications are meant to be describe a wise person, not a devotee or a karma. ये भक्त के लिए, योगी वालों लोगों के लिए नहीं है. But they are told with the seeker in view. If you want to be free from hatred, well, that happens to be the nature of Atma. You don't want to hate anybody. You want to be free from hatred. You want to be free from. So you have to understand that it is not what you want, it is your swarupa. It is raga is your swarupa. Like is your you, because since there is nothing other, there is actually no liking and no dvesha, no disliking, no dvesha. This is what Bhagavan says. So Bhagavan says, if you want to be free from hatred, well, that happened to be the nature of Atma. You don't have to, you just have to understand your Swarupa.
You have to दरवाजा बंद कर दो please, मुझे डिस्टर्ब होता है. So if you want to be free from hatred, well, that happens to be the nature of Atma. If there is no doubt or vagueness that nature of Atma is fullness, Ananda, the expression in interacting with the world will be based in that Ananda and will express as love. The one basic emotion that modifies into compassion, friendliness, and so on as the situation requires. All these expressions are of Ananda. Ananda is the nature of Atma. Jnani understands that. ज्ञानी इस बात को शास्त्रों के द्वारा clearly समझ चुका है that Ananda is my Swarupa. So there is no hatred for him. Though these qualities describe a wise man, they are not meant to judge whether the person is wise or not. They are purely descriptions of those values and attitudes that a seeker should cultivate. These are the attitudes. These are the baby steps. These are the steps one should take to understand Paramatma. Adveshta Sarva Bhutanam. The first step, the one who is free from hatred, Adveshta, towards all being, Sarva Bhutanam. Sarva Bhutanam means he doesn't hate anything, nothing. Since there is no thing, there is no hatred too. So understanding that there is no other, you won't have hatred. Very easy जी, बहुत इजी है ये बात को जानना. तो व्हाट यू हैव टू नो, आपको क्या जानना है कि कोई और कह करके कुछ है नहीं. जिसे मैं कुछ और समझता हूं, दैट इज ऑल मिथ्या. इट इज मी अलोन विच इज अपीयरिंग एज संसारा. Understanding the Swarupa, you will be free of hatred. You will be free of dvesha. You will be free of all dislikes. That there is no other. किससे hate करूं? Whom should I hate? Whom should I hate? The one whom I call my brother or my neighbor or my friend or my enemy is not other than me. Is not other than me. So Bhagavan Shankaracharya says, even though a person may cause him some pain, the Jnani does not entertain any hatred or ill will towards the person. For him, this is the very natural, because he sees all creatures as himself. He sees everybody as himself. He sees everyone as Paramatma. उसको सब परमात्मा स्वरूप ही दिखता है. He sees everyone as himself. No one else. There is no one else to be hated. So, though it is an expression in keeping with the Shastra, psychologically speaking, this is how it works. So all the psychologists know it. How you see, coming out of depressions also, this is the way you come out from your depressions. All your psychological problems, you can come out with all these attributes we are going to talk about. I'm not going to talk about all the attributes in 1 day or 2 days. It will take time. Slowly, it has to enter the mind, and through mind, it has to become your Swarupa. You have to understand that this is my Swarupa. Jab tak gaining knowledge will not help. But I am a Jnani, I know everything. Yes, sir. You are a Jnani, but you are still being knowledged. You haven't recognized Paramatma ji. So Jnana should become you. It should be your Swarupa. Become you means
The knowledge about something, the knowledge should become your Swarupa. The knowledge, that is why Bhagavan is called Jnana Swarupa. Bhagavan is Jnana Swarupa. It should become your Swarupa. Adveshta. Adveshta is my Swarupa, because I am Ananda Swarupa. So there is no Adveshta. Gyan is, one should be Adveshta Sarva Bhutanam. There should be no Dvesh with anybody. कोई द्वेष नहीं रखता. क्यों? Because there is no other. It is me alone. Be understanding everything as oneself is my Swarupa, which is Ananda Swarupa. Therefore, there is no hatred. There is no requirement of any hatred. There is no hatred, sir. I hope you have understood. Every gyan, every knowledge, every bit of knowledge, the correct knowledge should become your Swarupa. There are only बहुत knowledge नहीं है. Satyam Jnanam Anantam Brahma. So this is your, this is what, this is how psychology works. This is how it works. Hatred arises only when someone can make you unhappy. If someone cheats you, you feel cheated, naturally you will hate the person. Upon the world, you will definitely divide the world into, ये मेरे को पसंद है बिकॉज इन्होंने मेरे बहुत मदद किया. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आई डोंट लाइक बिकॉज ही हैज इंक्रीज्ड द taxes. So is abhi before elections you all liked him. After elections, he has come out with certain rules. You don't like him now. Hatred. These are just examples. Don't take it seriously. So you have been deceived and feel outraged. If you depend on the world, you will definitely divide the world into object of ragas and dveshas. If you depend on somebody, you will have ragas and dveshas. An object that you think makes you unhappy, you will naturally hate. But if you have inner freedom concerning your dependence upon the world or for your fullness, your vision is purely objective, and love is your natural expression. Love is your natural expression. Therefore, it is said that you don't have to love somebody. Love is your nature, Ji. Love is your nature, and there is no other to be loved. You love. The best, the love is yourself. वही प्रेम है. Loving Paramatma, understanding Paramatma is love. Understanding Paramatma in the other is love. People say, I love her, I love him, I love my children. Are you don't have to love a person. Love the Paramatma much, because you identify yourself there. You identify. You identify. And then you दिखता. और थोड़े दिन बाद he starts, or you start depending on him. And then he follows his own way of life. फिर वो अपना जिंदगी जीता है. He finds love somewhere else. And your dependence is in खतरा now. आपका dependence खतरे में है. So you are scared. डरा हुए हैं. Since he loves someone else, what will happen to me? This dependence on other is the cause for fear. So first you have to understand the Paramatma Swarup, and then you have to forget about depending. मैं ही तो हूं.
Why should? There is no nothing, there is no requirement of depending on other. But if you have inner freedom concerning your dependence upon the world for your fullness, your vision is purely objective, and love is your natural expression. You have no resistance to a person being as he or she is. You may not be able to change them, even though you had no a change would have changed the entire society. Even a wise man may have many people around him, some of them his own disciples, whom he cannot totally change. This is because it is very difficult to for a people to change. They will praise the wise man, attributing all that is good to him and not to themselves. And at the time, the teacher is saying, you are everything, but if you project all that is good onto someone else, you can continue to be as you are. And that is easier than changing, because change is very painful. So you cannot change anybody. You can't change. Don't even try to change anybody. बहुत बार क्या होता है, the problem is we try to change the person. It is, you should accept the person. You should accept the individuality from the problems, from whatever the problem you might have, from whatever you want. You can't change person's behavior. Behavior. So you have to understand the changeless is Paramatma, and that Paramatma is me. So then again, if you do not change, it is also painful. So you pray to invoke the grace for the necessary change to take place. The commitment to change express sanction for the ignorant to hate. The point is, no person has a reason to hate another in as much as a person is what he is, because he cannot be otherwise. If he could, he would certainly change. If he could change, then he would have changed. What changes? See, it is said, if the best way to change a person is to pray. Pray to Bhagwan, invoke Bhagwan, invoke Bhagwan. The change, for the change. Invoke Bhagwan means give him knowledge, give him jnanam, give him knowledge. He will, the things you will find, things will change. That is the truth.